students, how are you all? I hope that you all are fine. My name is Virda Nirali from Saraswati Group of Education, and today in this session we are going to start with a new poem, that is poem number 1, Little Things. Now, as you all know that before starting any poem or a chapter, what we are learning first? Yes, we are learning the vocabulary words of that chapter or a poem. And why it is important to learn vocabulary? Because it gives the clear idea of the word, or it gives the exact meaning of the word. And apart from that, it also improves our skills such as reading, listening, speaking, writing. All these skills are improved by learning vocabulary words, right? And you can also improve your creative writing part कि आप जो ऐसे और वो सब लिखते हो. If you have a good vocabulary, then this part can also be improved. आपका ये part भी बहुत improve हो जाएगा. You can write it so well in that part also. So for all these reasons, it is very much important to learn vocabulary words. Okay? So let's start with our first vocabulary. Our first vocabulary is Beauteous. Beauteous means beautiful. Beauteous means beautiful. Something which looks beautiful. You know the meaning of beautiful, right? Wow, she looks so beautiful. So something which looks beautiful, a thing or a person, anything that we compliment that thing. जो बहुत अच्छा दिखता है, right? That we say it as beautiful. Beauteous means beautiful, right? Then afterwards, humble means ordinary, not very important. Ordinary means वो बहुत important नहीं है, right? Not very important means बहुत ज़्यादा वो important है पर लेकिन वो बहुत ज़्यादा इतना important नहीं है, right? That is humble. Ordinary means something which is very common. Now eternity, this means time without end. कि ऐसा टाइम जिसका कोई एंड ही नहीं है. As we know that टाइम जो है वो चलता ही जाता है, उसका कोई एंड नहीं आता, right? If a day ends, again a new day starts, so there is no end of that thing. So that means eternity means time without end. जो समय है उसका कोई एंड ही नहीं होता है, as we all know that thing. Then afterward, Eden. Eden means a place of happiness and innocence in the Bible. Eden means यानी कि ऐसी जगह where a place of happiness, we get happiness by staying at that place, and innocence, बहुत ही innocence बड़ी जगह हो, and जो ऐसा बाइबल में बोला है, like we Hindus have Mahabharata, Bhagavad Gita, right? Like that only the Muslims have their Quran, Bible, everything. So in their Bible it is written that Eden means a place of happiness, ऐसी जगह जहाँ पे हमें खुशियाँ मिले, right? If we go in a garden or somewhere like a place, we feel happy over there. So a place where we feel happy, that is known as Eden. So these were all our vocabulary words. Now let's have a quick recap of all the vocabulary words. Beauteous, beautiful. Humble, ordinary, not very important. Eternity, time without end. Eden, a place of happiness and innocence in the Bible. So these were our vocabulary words. Now, before starting our poem explanation, let us understand that who has written this poem. कि ये poem जो है वो किसने लिखी है? So this poem is written by Julia Abigail Fletcher Carney, she was born in the year 1823 and she died in the year 1908, that is 1908. Was a teacher, वो एक teacher थी, and poet from the United States of America. और वो एक poet थी और वो कहाँ से थी? That she belongs to USA, that is United States of America. Now she is best remembered for this poem. कि ये जो उसने जो पोम लिखे ये वाली लिटिल थिंग्स, शी इज़ रिमेंबर्ड, वो सभी को इतनी याद रह गई थी और इसी पोम की वजह से वो सभी में एकदम शी बिकेम अ फेमस. एंड ये जो पोम है वो उसने 1845 में लिखी थी. 1845 ईयर में उसने ये पोम लिखी थी.
right? Now, what this poem is all about? The poem reminds us about the joy of paying attention to the little things in life, that we often ignore the things that make our life special. Little deeds of kindness and love. Means this poem is explaining कि the joy of paying attention कि हम कई बार लाइफ में छोटी छोटी जो जिसमें से हमें खुशी मिलती है वो चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ हम बड़ी चीज़ों पे ही ध्यान देते हैं. But we just ignore the small things, little things, we ignore that part. But we should not ignore that because that makes our life very much special. So we should not ignore that part. So this poem is explaining about that, right? And apart from that, the poem, as I have told you, right? So here the little things have a great importance in life. कि यहाँ इस पोम में ऐसा बताया गया है कि छोटी छोटी जो थिंग्स है उसकी भी बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में. A small things also have a great importance in our life, and that they are very important because वो इतने important क्यों है? Because every big thing is made up of these little things. कि छोटी छोटी चीज़ों की इतनी importance क्यों है? Because by collecting such small things, a big thing is being made. कि छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके एक बड़ी चीज़ बनती है, right? So that's why it is important. Directly कोई बड़ी चीज़ नहीं बन जाती है. By collecting and having a small little things in our life, it makes a one big thing, right? So that's why the small little things are having its great importance in our life. Now, so this was the brief introduction of the poem. Now let us start with the poem explanation. So in our first stanza, little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the beauteous land. So what this line says that little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the beauteous land. So what does this line means? कि ये लाइन जो है हमें क्या एक्सप्लेन करती है? So means that just because a drop of water is small, कि जो पानी की बूंद है वो तो एकदम small है, little drops of water, that is very small, right? So we think it does not have, ये पानी की बूंद अगर यहाँ पे गिरी, so we will not value that thing. वो उसकी little drop of water की हम वैल्यू नहीं करेंगे, right? कई बार हम आधा ग्लास पानी का पीकर वो पानी वेस्ट कर देते हैं. अगर आपको वेस्ट ही करना है तो अगर आपको पूरा ग्लास पीना ही नहीं है पानी का, तो फिर आप पूरा ग्लास आप फिल ही क्यों करते हो? You just fill the half glass if you want to drink half only, right? But you are just not understanding the value of that thing, because the little drop of water does not have value, or it is useless. वो कोई काम का नहीं है एक single drop इसलिए. But we forget to notice that when these little drops come together, पर हम लोग एक बात भूल जाते हैं कि ये जब पानी की एक एक बूंद जब इकट्ठा होती है, right? When it is collected, वो आप अगर एक बॉल रखो और उसमें एक एक पानी की बूंद आप डालते जाना. So by collecting all these drops of water together, they form a mighty ocean. Means big and powerful. Mighty means a big and a powerful ocean, right? So here it is said that by collecting a small little drops of water, we create a mighty ocean. They form mighty ocean. A big and a powerful ocean is formed, and the tiny sand particles, कि जो sand particles है, right? वो अगर एक sand particle होगा तो there will be no value of that thing. But by having so many sand particles together makes the beauteous lands. कि ये जो हमारी इतनी beautiful land जो हमें मिली है, so this land is just because the sand is collected all together. They are all together. अगर वो एक single होती, then there is a possibility कि वो इतनी beautiful land बन पाती. But अगर हम उसकी वैल्यू ही ना करते और कुछ ना करते,
तो ये माइट कि ये जो लैंड नहीं बन पाती, राइट? सो by learning the small things of importance, it creates a big thing. कि अगर छोटी छोटी चीज़ों का भी हम इम्पोर्टेंस समझने लगे, then one day it will going to create a big thing for us, right? Then afterward, next stanza, and the little moments, humble though they be, make the mighty ages of eternity. Now what does these lines means? That and the little moments, I'm again repeating the lines, listen to it carefully. And the little moments, humble though they be, make the mighty ages of eternity. So what does these lines means? So these lines means that the little moments of life मीन्स कि हमारी लाइफ की जो छोटे छोटे एकदम मोमेंट्स रहते हैं, वेदर इट इज़ हैप्पी और सैड, वो हैप्पी हो या सैड मोमेंट, दैट डजंट मैटर, बट इवन इफ दे आर स्मॉल, कि अगर वो छोटे वेरी स्मॉल मोमेंट्स है, राइट, कोई ऐसा बड़ा सा इवेंट हो और हमें याद रह जाए, बट ये तो कोई छोटी छोटी खुशियाँ हमें जिसमें से मिलती है. सो दैट मीन्स अ स्मॉल और अ हम्बल मीन्स लेस इम्पोर्टेंस, कि उसका कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है और वो इतना बड़ा भी नहीं है, बट है इट इज़ हैविंग वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटा है. दे विल टुगेदर टर्न इनटू एजेस, मीन्स वो जब एक साथ मिलके वो एक एजेस मीन्स अ लॉन्ग टाइम और ईयर्स, मीन्स जब हम वो एक मोमेंट अभी था वो चला गया है, आप उसमें आपने वो उसको इग्नोर भी कर दिया कि चलो ऐसा तो होता रहता है लाइफ में, ठीक है ना, पर आगे जाके जो आपकी लाइफ में टाइम आएगा, एट दैट टाइम यू विल जस्ट रिकॉल दैट मोमेंट्स, आपको वो जो मोमेंट्स थे वो याद आएंगे, इवन स्मॉल मोमेंट्स भी आपको आपकी लाइफ में याद आएंगे, राइट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ, एंड दीज एजेस विल मेक इटर्निटी, और जो हमारे एजेस, दिस एजेस विल मेक इटर्निटी. इटर्निटी मीन्स आवर होल लाइफ टाइम ऑन अर्थ, कि हमारी जो पूरी लाइफ है, हमने जो अर्थ पे यहाँ पे जो हमने स्पेंड की, इट विल मेक इट रिमेंबर, वो हमें याद रहेगी by making such small moments in our life, right? Then now the third stanza, little deeds of kindness, little words of love, make our earth an Eden like the heaven above. So what does these lines mean? Little deeds of kindness, little words of love, make our earth an Eden like the heaven above. Means कि what does these lines means now? So these lines is saying that the little deeds of kindness, like kindness means helping others, हम किसी की help कर देते, so we say that you are very kind. So जो हमने किसी की थोड़ी सी भी हेल्प की हो, बीइंग काइंड, और किसी को माफ़ कर दिया हो, राइट, उसकी गलती के लिए, वी आर बीइंग सो काइंड, हम याद नहीं रखते हैं, और एक्सेट्रा. एंड द लिटिल वर्ड्स ऑफ लव, लाइक टॉकिंग इन अ लविंग एंड अ जेंटल वे, विल मेक आवर अर्थ लाइक इडन. मीन्स अगर हम किसी के साथ थोड़ी भी प्यार से बात कर ले और थोड़ी अच्छे से बात कर ले, सो हियर द पोएट इज सेइंग दैट बाय डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स of kindness and of loving, right, the words of love, so that will make our earth like Eden. तो वो हमारे अर्थ को एक ईडन की तरह बना देगा. ईडन वी नो द प्लेस ऑफ हैप्पीनेस एंड इनोसेंस, राइट, जहाँ पे खुशियाँ मिलती, तो वो पूरे अर्थ को ऐसा बना देगा. बिकॉज अगर सभी लोग अच्छा ही करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, तो हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी. अगर आपके साथ कोई बुरी तरह से बात करे, देन वी विल फील बैड, बट कोई अच्छे से ही बात करे, देन वी विल नॉट फील बैड, वी विल बी हैप्पी, राइट? सो ही जस्ट लाइक हेवन, हेवन की तरह स्वर्ग, हेवन मीन्स, एंड द अर्थ विल बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव इन, और आफ्टर दैट द अर्थ विल बिकम अ बेटर प्लेस, वो अच्छी एक जगह बन जाएगी रहने के लिए, राइट? सो हियर इन दिस पोम, लिटिल थिंग्स, what it is explained exactly, make everyone happy and are greatly responsible to change our lives. Means this poem is little things. वो हमें क्या सिखाता है
कि सभी को खुश रखो, मेक एवरीवन हैप्पी एंड आर ग्रेटली रिस्पॉन्सिबल टू चेंज अवर लाइव्स, कि हम ही जो रिस्पॉन्सिबल है लाइफ को चेंज करने के लिए। ऑफन लिटिल थिंग्स इन लाइफ इंडिकेट ग्रेट चेंजेस, कि कई बार मैनी टाइम्स हमारी लाइफ में ये छोटी छोटी चीज़ें एक बड़ा चेंज लाती है। छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ा एक चेंज लाती है। लाइक आप जब एग्ज़ाम देते हो, राइट, सो बाय फ्रॉम अ वेरी फर्स्ट डे जब स्कूल स्टार्ट हुई तब से आप थोड़ा थोड़ा लर्न करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको लास्ट में पूरा का पूरा आपको आ जाएगा। अगर आप लास्ट में ही सब चीज़ें याद करने बैठोगे देन इट विल नॉट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस। थोड़ा थोड़ा करके करोगे देन इट विल मेक सेंस। ऐसी ही तरह हमारे लाइफ में भी है टू लर्न बाय, इसी तरह हमारे लाइफ में भी जो छोटी छोटी चीज़ों से एक बड़ा चेंज मिलता है। सो एज लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक माइटी ओशन, कि छोटे छोटे बूंदों से एक बड़ा ओशन बनता है। सिमिलरली लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस, ऐसे ही तरह लिटिल डीड ऑफ काइंडनेस, कि थोड़ी भी काइंडनेस हम किसी के तरफ हम दिखा भी दे, राइट, बाय हेल्पिंग और बाय वे ऑफ सेइंग आवर वर्ड्स कैन मेक अस डियर टू इवन आवर एनिमीज, कि जो भी हमारे दुश्मन है वो भी हमारे दोस्त बन जाएंगे। एंड दस मेक दिस वर्ल्ड अ हैप्पी प्लेस टू लिव इन, और ये जो वर्ल्ड है वो एक पूरा का पूरा हैप्पी प्लेस बन जाएगा रहने के लिए, राइट। सो दिस वाज द पोएम अबाउट लिटिल थिंग्स। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम वेल। नाउ लेट्स रिकॉल दिस पोएम विद द हेल्प ऑफ द वीडियो। Little things. Little drops of water, little grains of sand, make the mighty ocean, and the beauteous land, and the little moments, humble though they be, make the mighty ages of eternity. Little deeds of kindness, little words of love, make our earth an Eden, like the heaven above. Okay, so I hope students that you have seen the video and you have recalled the poem, that is little things. So till now we have understood the vocabulary words, then the explanation of the poem, and we have also recalled the poem with the help of the video, right? So now we are now moving towards to our language part. So over here now the language part which we are going to study is the words now sand and land. You can see that are rhymes together, right? They are rhyming words. So now we have supposed to complete these rhyming pairs. Complete these rhyming pairs, right? So we are supposed to complete the rhyming pairs. Now over here the number one is LO-E, and the pair which we are having, that is, so over here A-VE, something like this is given. So here there is a mistake, here there is a printing mistake in your book. आपके बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप ये A को कट कर देना, ठीक है? You just remove this A. So now the rhyming word, that is love, L-O-V-E, and the similar word for to that, that is dove. So we have love, verb, similar sound, dove, verb. Thus we are having a similar sound. Okay. Now the next is okay. So here I have written DR-PS. So it means drops. Now the rhyming word for drops, that is crops. Drops, crops.
you are having a similar sound at the end of the word, so it rhymes drops, crops, right? Now, another one is so here it is written like this way. Right? So the rhyming word for this is, that is grains. 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 And the rhyming word for this is, that is brains. Grains, brains. Grains, brains. It rhymes the same. Right? Then afterward, AG_S, and the pairing word which is, so the rhyming word for this is ages, pages. Ages, ages, pages. Right? Then afterward, fifth one is so D-DS. So that is deeds. Then needs. Deeds, needs. You are supposed to find out. If you know another word related to this, you can also fill that thing. Okay? Now the last one is so that here it is make cake. Make cake. Right? So in this way you are supposed to complete these rhyming word pairs. Okay? I hope that you have understood this part. So in today's session we have completed our poem. We have also learned vocabulary words, understood the poem, and we have recalled the poem with the help of the video, and we have also completed our language part. So these are the things which we have learned in today's session. Right? And still if you have any doubt, then you can ask me in the comment section, or else you can just go through the video again, so that your answers are there in the video only. You can by rewatching the video, your doubts will be solved by itself only. Okay, and as a part of revision, I'll give you some of the questions in the description section, and if you know the answers, then you can give your answers in the comment section. आप मुझे अपने answers comment section में दे सकते हो, ठीक है? So this was all about today's session. I hope that you have enjoyed this session. So till then, bye everyone. Take good care of yourself and thank you.